Anyone? So what Service. are services? Services on a computer. Let's say on this computer, this is a server. So Microsoft this, services. nahi, I mean, on a computer, let's say this machine is running ADDS and all, domain controller and all. So if we go to services.msc, it will open all the services running on this computer. ठीक है, तो यहाँ पे अभी Active Directory domain services, there is a service running. In order to have this service run, there will be a account dedicated for it. ठीक है, अभी यहाँ पे ये Active Directory का service account, I mean this service will be functioning with the help of a service account. ठीक है, for example, like let's say, yeah, so in your mobile phone, there is sync happening, right? अभी आपके जो contacts है, जो gallery में जो phone, I mean जो photos हैं and all those things, they are getting synchronized from your local storage to your cloud storage. So this synchronization के लिए कुछ automatic, there is something running automatically, right? You don't have to interfere every time. It's happening automatically. So there is an application who is doing this for you, right? Behind your capability. I mean, आपको खुद को करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, right? It's happening automatically uh, by the application itself. Let's say you're using Google Drive or OneDrive or iCloud का storage है, ठीक है, iPhone है, so you have iCloud storage. So there is an application in the backend who is doing this task for you, राइट? इट इज सिंकिंग ऑल दी फोटोज. अभी आप कुछ नए फोटोज लिए, वो नए फोटोज भी फिर सिंक करेगा और इट विल स्टोर इन द क्लाउड स्टोरेज. So it will synchronize. Yes. So this is happening automatically. So to make this happen automatically, the application should have some permissions granted. You will grant those permissions to the application, right? Application को बोलेंगे, yeah, this should have access to my gallery. Gallery का access देंगे तभी it will be able to sync your photos, right? गैलरी का एक्सेस Yes. नहीं देंगे, लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको पॉपअप आता है, राइट? दिस एप्लीकेशन वांट्स टू एक्सेस योर कैमरा, योर कॉन्टैक्ट्स, राइट? Yes. जैसे आप उबर या ओला एप्लीकेशन खोलेंगे, एप्लीकेशन वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, राइट? तो आप अलाउ Yes. करेंगे या Yes. फिर डिनाई करेंगे. सो इफ यू आर परमिटिंग हिम, देन ओनली ही विल बी एबल टू. तो यहाँ पे जो आरबैक रोल है, दैट इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर. क्या कर रहे हैं आप? एप्लीकेशन को यू विल बी ग्रांटिंग सम परमिशंस, ठीक है? विद दैट परमिशन द एप्लीकेशन विल बी एबल टू डू द टास्क ऑन योर बिहाफ. तो वो एप्लीकेशन कैसे करेगा? इट विल ऑथेंटिकेट एंड गेट द एक्सेस. वो ऑथेंटिकेट कैसे करेगा? एक सर्विस अकाउंट से. वो जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन की एक सर्विस रहेगी. वो सर्विस का एक सर्विस अकाउंट रहेगा. वो सर्विस अकाउंट के थ्रू वो ऑथेंटिकेट करेगा एवरी टाइम एंड इट विल गेट द एक्सेस एंड इट विल डू द एक्टिविटीज ऑन योर बिहाफ. ठीक है? So this is how a Yes. service account functions in the backend with the help of an application. So coming back to RBAC, how RBAC works, there is some service principal. Service principal is nothing but an application. Confuse नहीं होना है यहाँ पे. Service principal मतलब application है, ठीक है? It's an application integrated in Azure. Yeah, it can represent a user, a group, a service principal, or manage identity that is requesting access to Azure resources. तो आप Azure के resources को permission दे रहे हैं access करने के लिए. Someone is there in the lobby. There are, yeah, this is what I was talking about: owner, contributor, and reader. There are certain other roles as well. So this is on the subscription level: owner, contributor, and reader roles. So there are only 3 roles on the subscription level. The document also covers about it. What are the subscription level?
Hope thing. Okay, for the interview perspective you just need to understand, अगर अगर समझो आपको ये क्वेश्चन है what is RBAC. RBAC is just used to simplify the assignment of permissions. Okay, so we are assigning the access, we are defining the access of a user based on his role in the company. Okay, so that is how it is simplified. So RBAC is basically used to simplify the access assignment for a user. Okay, how it is simplified? So with the, we just have to understand the role of that user. What is his role over here? उनका काम क्या है यहाँ पे प्रोजेक्ट में? उनका काम ये है स्टोरेज रिलेटेड एक्टिविटीज करना है. तो ठीक है, फिर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल देना है उनको. So if he is assigned with a storage administrator role, by default his access is getting defined over there. All his permissions are getting granted. जो जो स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर को जो जो परमिशंस चाहिए वो बैक एंड में उसको असाइन हो गए. हाउ? वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लुक, राइट? जी। जैसा यहाँ पे है सिक्योरिटी एडमिन, अगर वो दैट पर्सन बिलोंग्स टू सिक्योरिटी टीम, if he is a security administrator, then he will get all the permissions by default. So तो back end में permissions है. In front it is looking like a role, but role के अंदर क्या है? आपको permissions है. These are the permissions, role permissions. So बस इतना ही बोलना है इंटरव्यू में, ज्यादा डिटेल कुछ नहीं है. It is just simplifying the access. Just defining the access is getting simplified. Access, simplifying the access assignment. That's it. ठीक है. ओके। And how RBAC functions? RBAC functions with the help of privileged identity management, PIM. ठीक है. What is PIM? PIM allows you to grant just-in-time access. JIT, just-in-time access. Just-in-time access in the sense, we have two different options in PIM, that is eligible assignment and active assignment. Eligible assignment is like, yeah, Uzma, sorry. No, nothing. Yeah, so eligible assignment is like, if a user is, if you don't want to give him access a particular role right away, but you just want him to utilize that access whenever needed, then you can make him a eligible person, so he can utilize it whenever it is actually needed, instead of giving him the access then and there right परमानेंट। away. Huh. You can make him a eligible person to be able to utilize that access whenever it is required for. So that is how we are actually avoiding unnecessary accesses with the help of PIM, privileged identity management. मतलब जो unnecessary जरूरत नहीं है उसको वो access देने की बजाय क्या कर रहे हैं, जब जरूरत है जब utilize करो, उस हिसाब से क्या है eligible assignment दे रहे हैं. ठीक है. And then that too you can specify the time period, कितने time के लिए देना है, or else you can make him a permanently eligible as well. So we have options over there. You guys have to practice this actually. That is the reason आप लोग tenant create किए, उसका मतलब ये practice करना है आप लोग को. ठीक है. यहाँ पे RBAC जी। में जाना है, roles create करना है, roles assign करना है. PIM, you have to explore PIM, eligible assignment, active assignment, and the activity which we did yesterday, right? फिर वो यूजर से लॉग इन करना है, फिर उसको एक्टिवेट करना है, राइट? सो ऑल Yes. दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग इंटरव्यू के टाइम पे. इफ यू हैव टू शोकेस दैट you have a practical knowledge on this during your interview, then you have to practice it. श्योर। ठीक है. ये AAD connect installation भी lab available है, so you can connect, you can configure your own VM, and you can configure your AAD connect as well. Once we are done with the configuration tomorrow, you can also do for yourself, or if not on my lab, if you have your own, like अगर आपके laptop में space है, you can have your own Hyper-V enabled. ठीक है. Hyper-V, it's available in Windows 10, Windows 11 as well. तो आप अगर आपके लैपटॉप में स्पेस है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस. बट अगेन यू विल हैव टू हैव योर ओन परचेज्ड डोमेन. It's available for 75 rupees.
ठीक है, तो आप खुद खरीद सकते हैं. For people who haven't seen this domain, how to purchase a domain, I'll showcase once again. देखे आप लोग सब नहीं? I don't remember who all were there. Ibrahim, Ishaq, do you know how to purchase a domain? No, sir, I don't know. Okay. So 0.10. So this is a third-party domain provider. I'm just preferring to go with Hostinger. There are other options as well, like GoDaddy है, और भी दूसरे domain providers है market में. Hostinger is what I usually prefer going with. ठीक है. अभी अगर इशहाक के नाम से कुछ domain available है, search करना है, तो we can give a try. अपन गोडैडी से आमिर के नाम पे खरीदे थे एक अच्छा, डोमेन. जी जी. कितने में मिला था कि? 99 कुछ था उनका. अच्छा. अच्छा. So ishaq.in is not available, but ishaq.online is available. ishaq.store, ishaq.tech, ठीक है, ये डोमेन्स अवेलेबल है 75 रुपीज में फॉर 1 ईयर. ठीक है, तो आप ये डोमेन खरीद सकते हैं. ठीक है, ये डोमेन खरीद के आपका खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर उसको आपके टेनेंट में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. वेरीफाइड डोमेन बना के, डोमेन वेरीफाई करके उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट. Okay. All right, so I guess it's already 10:10 now. I'll stop the recording.